According to Ferdinand's theory of semiotics, there are multiple contextual meaning. There are multiple contextual meaning. There are multiple contextual meaning, signs and symbols. There are contextual meanings behind signs and symbols. In this media text, South Asian pickles, South Asian pickles, South Asian pickles South Asian pickles signify the ethnic identity of the characters while the mugs in the kitchen show the signs of Britain, so it can be argued that this family shows the British Asian जिसे कहते हैं, Eurasian ethnicity. Now we are moving forward with our paragraph 4. In paragraph 4, we need to go with in paragraph 4, we need to go in this particular way कि हम इसमें रोलैंड बार्थ्स की थ्योरी ऐड ऑन करेंगे. रोलैंड बार्थ्स की थ्योरी थी डेनोटेशन एंड कनोटेशन की, and connotation की, and the denotation is linked with the technical codes, and connotations are the contextual meaning. ठीक हो गया जी. चलें जी, इस सिनेरियो को और आगे लेके चलते हैं. अब हमने इसके पैराग्राफ को लिखना कैसे, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग मोर. ओके, लिखें अपने पास. According to Roland Barthes' theory of denotation and connotation, technical codes, established connotations, like contextual meaning. याद रखिएगा, if there is no context with the technical codes, तो थ्योरी के कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको. थ्योरी को एग्जामिनर बोलेगा irrelevant है. हम थ्योरी क्यों लिखते हैं? थ्योरी इसलिए लिखते हैं ताकि एग्जामिनर को बता सकें हमें पता है क्या चीज़ है, what we are writing, हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात करें हमें पता है. समझ रहे हो मेरी बात? एग्जामिनर सिर्फ आपको दुआएं देगा अगर आपने सिर्फ रोलैंड बार्थ्स का नाम लिख दिया. वो देगा पागल क्या है, आगे क्या है, if there is no linkage with the text. Am I right? क्या लिखवाया बेटा? Established connotations, contextual meanings. And contextual meaning. In this extract,
अब देखो इसके अंदर कोशिश किया करो मैक्सिमम टेक्निकल कोड्स को ऐड ऑन करो, ठीक है। इन दिस एक्सट्रैक्ट द डायरेक्टर यूज द वाइट शॉट्स to show the settings and set design, while the laughter endorse the genre that is sitcom. Laughter endorse the genre that is sitcom. And the mise-en-scene code endorse the ethnic identity mise-en-scene code endorse the ethnic identity through costumes are linked with South Asian ethnicity. South Asian ethnicity. अब देखो इसमें क्या हुआ, हमने टेक्निकल कोड्स को लिंक किया किसके साथ, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग के साथ, what it shows, what these technical codes are representing. Am I right? Now I am moving forward from paragraph number 5. ठीक है, I'm moving towards the para 5. Now you need to understand how it works. Okay, para 5 is all about, we need to go scene by scene. We need to go scene by scene. In this media extract, this is all about a one scene, so we will divide the different parts of the scene in different components. Okay. In this in these paragraphs, you need to start the paragraph like the camera opens up. Okay. We will start like this. Camera opens up से हम start करेंगे और फिर उसका short name लिखेंगे, किस shot से कैमरा स्टार्ट हो रहा है, कोई मूवमेंट हो रही है। अब आप क्या हो गया, कैमरा का कोड हो गया, ठीक है। Phenomena is very simple. We need to discuss about the technical codes. We need to discuss about the technical codes, and then we need to link these technical codes with what? With the connotations or representations. And representation, short name, सही है। अब आपने connotation और representation के साथ लिंक किया, and then link these representation with juxtaposition. Keep one thing in your mind, आपका narrative minimum होना चाहिए, representation maximum होना चाहिए। Got it? तो narrative वाला पार्ट, फिल्म की कहानी लिख के नहीं आ जाना। एग्जामिनर को पता है क्या हुआ है फिल्म के अंदर, फिल्म एग्जामिनर को पता है कि फिल्म में क्या हुआ, कि भाई ये हुआ, ये आया, भाई मुझे नहीं पता, मुझे बताओ इसमें से रिप्रेजेंटेशन एक्सट्रैक्ट आउट कैसे होगी, टेक्निकल कोड्स क्या है, एग्जामिनर वांट्स टू लिसन दैट पर्टिकुलर थिंग। एम आई राइट? क्लियर होगी बात? ठीक है। नाउ वी नीड टू राइट like we are going to start the paragraph like the camera opens up with the master shot and slight track movement. The camera opens up with the master shot with slight track movement, and Mr. Khan enters into the frame
enters into the frame and there was a match on action match on action. अब देखो होता क्या है मैच ऑन एक्शन, ये एडिट का कंपोनेंट होता है. इसके अंदर होता क्या है, जब कैमरे में कट लगता है तो एक्शन में कंटिन्यूटी होती है. एक्शन में क्या होती है, कंटिन्यूटी. तो जब वो मास्टर से कट लगकर मिड शॉट पे गए थे तो उनके जो न्यूज़पेपर को उठाने का शॉट था वो कंटिन्यूटी में जा रहा था. वी यूज्ड टू कॉल दैट शॉट मैच ऑन एक्शन. सही है, क्या लिखा है हमने, सेंटेंस पढ़िएगा. There was a match on action. There is a match. देखो कैमरे में मैंने क्या, match on action when the camera cut to the mid shot. There was a match on action when the camera cut to the mid shot. And he holds the newspaper. And he holds the newspaper and deliver the dialogue about the immigrants. कैमरा के अंदर हमने डिस्कस किया मास्टर टू द मिड शॉट, ठीक है. एडिट में हमने डिस्कस किया मैच ऑन एक्शन. मिजन सीन में हमने न्यूज़पेपर डिस्कस किया एंड साउंड में हमने डायलॉग डिस्कस किया अबाउट द इमिग्रेंट्स. ठीक है. Now we need to link all these technical codes with the representation part. Am I right? Okay. So afterwards you can write like this: the costume of Mr. Khan and the dialogues also connotes the representation with Eurasian ethnicity, as he was wearing a suit and as he was wearing the suit with beard and conventional cap. अब देखो न्यूज़पेपर हमारा प्रॉप था, हमने कॉस्ट्यूम की बात की, and the dialogues create juxtaposition with European ethnicity, कि भाई वो अपोजिशन क्रिएट कर रहा है ना, वो उसके खिलाफ बोल रहा है कि भाई इमिग्रेंट्स आर द ईस्टर्न यूरोपियंस. ठीक है. यस, फुल स्टॉप, आगे लिखेगा. नाउ वी नीड टू क्रिएट मोर आइडियाज. ओके. एंड आफ्टरवर्ड्स बल्कि इसको नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाओ. ठीक है. अब कहानी को थोड़ा सा आगे लेके देखो, थोड़ा सा नैरेटिव, फिर टेक्निकल कोड्स एंड देन रिप्रेजेंटेशन. गॉट इट. अब देखो मैं पैरा 6 पे आ रहा हूं. देखो, स्टार्ट विद द नैरेटिव, then link it, highlight the technical codes, and then आपने क्या करना है, link it
with representation. यानी कि आपने रिप्रेजेंटेशन के साथ लिंक कर देना है, एम आई राइट? अब देखो मैं एज रिप्रेजेंटेशन के साथ खेलूंगा इसके अंदर, ठीक है? आफ्टरवर्ड्स her daughter questioned his ideas about the immigrants, which creates the juxtaposition between two age groups like adults and young. Their facial expression, bracket में लिखो young individuals, their facial expressions connotes the differentiation of ideas with Mr. Khan, differentiation in their costumes, also established connotations in terms of age representation and juxtaposition, age representation and juxtaposition, like elderly women was wearing traditional clothes, traditional costume, while adult Mr. Khan were having Eurasian, while Mr. Khan was wearing Eurasian costume, British Asian costume, and young individuals were wearing more globalized clothing, मिस हो गया, were wearing more globalized clothing. The differentiation in costumes connotes the differentiation in age groups and their ideas. ओके जी, नाउ देखिए हमने सीन बाय सीन अपने 2 पैराग्राफ्स किए हैं एंड थ्योरी के साथ लिंक करते हुए 3 पैराग्राफ्स किए। फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब नैरेटिव को हमने इसी फिनोमेना को आगे लेके चलना है, नैरेटिव को डिस्कस करना है, टेक्निकल कोड को हाईलाइट करना है, रिप्रेजेंटेशन से लिंक करना है, एंड देन वी नीड टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। क्लियर हो रही है बात?